Okay, so namaste everyone. Since last Monday, we are conducting free webinars for the fresh brains, I would say. इसमें हम रोज नए नए गेस्ट, नए नए स्पीकर्स बुलाते हैं, नए नए टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने किचन और हमारे करियर को लेके बात की। आज हम थोड़ा सा मॉडर्न इंटीरियर को लेकर के बात करने वाले हैं। तो मॉडर्न इंटीरियर में हम आज हमारे साथ में गेस्ट हैं मिस्टर शारिक थडानी, हु इज डायरेक्टर ऑफ पाइथा इंडिया। पाइथा इज अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें नॉर्मली हमको जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग सीखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको जो बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड कैड। लेकिन आजकल जैसे मॉडर्न इंटीरियर में हमको काम करना है, तो हम सिर्फ ऑटो कैड से हमारा काम नहीं चलता है। सिर्फ कैड आने से आपका यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर, यू शुड नो द कैम्प कैड। और इसके थ्रू हम एक अपना नया करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम इंटीरियर्स में नई नई चीजें कैसे हम सीख सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम शारिक सर से बात करेंगे। अगर आपको मॉडर्न इंटीरियर पे जाना है तो आपको नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए फर्नीचर्स के डिजाइन डेवलप करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, डिजाइन करनी पड़ेंगी। और जब ये डिजाइन आप करने बैठते हो तो सिर्फ कैड आने से आपका काम नहीं होता है, आपको बाकी सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए। तो आज उसी को लेकर के हम शारिक सर से बात करने वाले हैं। शारिक सर का फिर से एक बार मैं परिचय करा देता हूँ। शारिक सर इज अ सेल्स डायरेक्टर ऑफ पाइथा इंडिया। पाइथा इज अ जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी. Sharik sir has 15 years plus experience in this industry. He is a software engineer, और Sharik sir is also wood expert. तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली देखने मिलता है, जिनको वुड के बारे में भी नॉलेज है और सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज है और मशीनरीज के बारे में भी नॉलेज है। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली हमको देखने मिलता है। तो आज हमारे साथ में शारिक सर हैं। वेलकम शारिक सर, नाउ डायस इज योर्स, नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन एंड गाइड अस ऑन मॉडर्न इंटीरियर। थैंक यू शारिक सर। Thank you so much for the introduction. Okay, so hello and welcome to all of the viewers here. And I will just start sharing my screen. And whilst I share my screen, I will just make a short intro of myself. Bharat sir already told you guys what I do, but I want to give a brief idea about my work and what I contribute to this industry. तो मैं बेसिकली जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है, जो इंटीरियर इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंटीरियर्स के लिए या कमर्शियल के लिए जो फर्नीचर बनाते हैं, so I provide a software sales and support to them. Now the software what I have is something which is made in Germany, or it's like 30 years old. और यहाँ पे whatever things you do on the software, that things go until the machine. So before I start with the topic about modern interiors, so you have to understand what is modern interiors and why we need a software. So of course, when I say term as modern, it means I'm not going to use pen and a paper. तो जब मैं modern चीजों की बात करूंगा, मैं पेन और पेपर लेके क्लाइंट को इंडस्ट्री के बारे में नहीं समझा सकता. I need a computer for it. अभी कंप्यूटर आ गया मेरे पास, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? I need a modern software, right? So what is modern interior? ये भी हम लोग बात करेंगे, and how it can support, to the industry with the help of a software. We'll talk about that. So let us go one slide ahead. So modern interiors is more about clean lines. Okay, when I say clean lines, जब आप एक interior या एक आप living room देखोगे, so sometimes there are arcs, sometimes you see a lot of geometry and a lot of hindrances are there, but इसमें आपको सिर्फ मिलेगी clean and straight lines. So this is like one of the thing which is important when you have to make something look modern. So modern मतलब ये नहीं that I'm showing a lot of fashions. It should be minimal. Okay. मैं फैशन के लिए कभी-कभी ओवरडू कर सकता हूँ. मुझे एक चेयर अच्छी लगी, मैंने डाल दिया, एक सोफा अच्छा लगा, वो भी डाल दिया, बट व्हाट अबाउट द यूटिलिटी? मे बी वहाँ पे मूव करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं. सो मॉडर्न इंटीरियर इज मोर अबाउट यूटिलिटी, नॉट अबाउट फैशन. एंड another important part is the color should be neutral. So
मैं रैंडम कलर मार्केट से उठा के जो मुझे पसंद है, if I start using it, then it would become a mess. So whenever I make a modern interiors, make sure that the colors are always neutral. Now, when I say neutral, what colors are neutral? Neutral color means like white, beige, black, or maybe on a grayish tone, and you can also use pastel colors. Then the most important thing is about the lights. What lights I'm using? Are there a lot of artificial lights, or I'm also making use of indirect light coming from like a sunlight and a natural light. So उससे जो light reflect होके आती है, you have to focus on that. Where is the window? How the light is coming in? Where I'm using what color? And the material what I'm using is specular. Is it going a lot of indirect light as well? So light is of two type. One is coming directly. अगर मैंने यहाँ पे एक spotlight लगा दी, so it would only give illumination into that particular area. But if I'm opening up a window and I'm applying nice natural colors, so जो light मेरे walls पे गिर रही है, that will also make my room bright. So it's important to use proper lighting as well for any interior. Another important part is open plan. Now people who stay in tier 1 and tier 2 cities in India like Mumbai, Delhi, Pune, yeah, you must be aware कि यहाँ पे spaces बहुत कम होती हैं. तो जहाँ पे spaces कम होती है, my planning should be very well. अभी planning में अच्छी कैसे कर सकता हूँ? I can remove the walls. अच्छा, what used to happen in past? If I give you a good example of open planned area, तो पास्ट में क्या होता था, हर रूम के लिए चारों तरफ मतलब वॉल और फिर एक तरफ डोर होता था. सो 3 साइडेड वॉल एंड 1 साइडेड डोर. तो मुझे किचन में जाना है तो मैं डोर ओपन करके किचन में जा रहा हूँ. बट इफ यू सी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लिविंग रूम के अंदर ही किचन है और किचन और लिविंग रूम के बीच में जो मेरी वॉल होनी चाहिए थी, पीपल रिप्लेस इट विद अ आइलैंड. सो आइलैंड से क्या होगा, मुझे वो आइलैंड की यूटिलिटी मिलेगी एंड आई एम एबल टू सेपरेट माय किचन एंड लिविंग रूम अगेन. तो मुझे वहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम मिल सकते हैं. मैं आइलैंड को एज अ ब्रेकफास्ट टेबल यूज कर सकता हूँ, एज अ डाइनिंग टेबल यूज कर सकता हूँ, और आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एज अ बार टेबल टू हैव अ नाइस सिप फॉर ड्रिंक इन द इवनिंग. तो मुझे वहाँ पे यूटिलिटी भी मिल रही है और मेरा एरिया में डिवाइड हो रहा है. ऑफ कोर्स अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो उस पे एक शटर लगा सकता है. सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन, हाउ यू प्लान योर इंटीरियर्स. Now another important aspect is that whatever things I am designing, it should not go on site. अभी क्या होता है, people come on site, even the furniture is made on site, even the POP work is made on site, but things have changed once we had this computer and this good technology rolling over in past few years. तो अभी क्या हो गया है, whatever things you do is done on computer, and lot of panel processing job is getting done in a factory. The factory is far away from the site where all these things is supposed to be implemented. Factories में बन के आया, it is flat pack, and any layman could understand, और site पे आके सिर्फ उसकी assembly होगी. So that is what called as design to machine. So let us understand how the process goes. Now everything start with a proper planning. So अगर planning नहीं है, so my end will all be on toss. So I will give a thought कि मुझे चीजें कैसी बनानी है. एक बार मुझे थॉट अच्छा हो गया तो मैं उसको स्केच करूंगा एंड देन वी विल बिल्ड इट. सो हाउ वी आर गोना डू दैट, लेट अस सी. पास्ट में क्या होता था, वी हैड एन इवोल्यूशन, ओके, इन दिस इंडस्ट्री एज वेल. तो इवोल्यूशन जैसे आदमी का इवोल्यूशन हुआ है, ओके, लाइक फ्रॉम होमो सेपियंस, एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ ह्यूमन नेचर हैज अराइव्ड एंड नाउ वी आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज. तो वो जो अपना जो इवोल्यूशन है, ऐसी इंटीरियर इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ है. So we started from a sketch, और फिर धीरे धीरे लोगों को 2D समझ में आने लगा कि हाँ, मैं स्ट्रेट अगर देखता हूँ या मैं टॉप से देखता हूँ तो ये प्लान कैसा दिखेगा. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 3D. अभी लोगों को हम 3D भी दिखा सकते हैं कि 3 डायमेंशन में ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रोटेट करके देख सकते हैं हम इसको. ओके, देन वी केम टू अ पैरामेट्रिक फर्नीचर. इसका एग्जांपल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटीरियर्स, एंड यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग. एंड देन once all of this was done, then people came to know कि अभी हम लोग कंप्यूटर के यूज से ये सारी चीजें जो हम लोग ने बनाई है कंप्यूटर पे, एक फ्लोर प्लान है, एक डिजाइन, उसको हम लोग एक पार्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब मुझे डिटेल लिस्ट मिल जाएगी कि मुझे साइट पे क्या लेके जाना है. ओके, इनफैक्ट स्मॉल स्क्रू इज देयर, मुझे मिल जाएगा कि मुझे 100 स्क्रूज चाहिए, तो वो रेडीली वहां से साइट पे जाएगी. ऐसा नहीं साइट पे फिर एक आदमी बोल रहा है कि 4 स्क्रू कम पड़ गया, सो लेट्स गो बैक एंड देन ऑर्डर अगेन. Okay, so all the order forms, all the things are getting generated from the 3D design. उसके बाद clients को जब अपना build करते हैं, so let's say मैंने डिजाइन बनाया और client ने मुझे पूछ लिया roughly what is the cost. So मुझे client को क्या बोलना पड़ेगा, please give me 3 days, because मुझे जो सिविल काम है उसका कॉस्ट निकालना है.
अच्छा कॉस्ट मुझे किसका निकालना है, मुझे ब्रेकिंग का भी कॉस्ट निकालना है, मुझे मेकिंग का भी कॉस्ट निकालना है, and then I have to take the cost of my plumbing, my electrical, my furniture, my assembly, transportation. तो उसके बाद में क्या होता है, give me a time of 3 to 4 days because that is going to take time. अब 3-4 days में that customer might get lost, and if it's getting lost, then I lose the total contract. So the softwares are now capable of generating the codes as well. And after that, we can also make a nice ray tracing. So this is something like you see a thing which is next to real. So photorealistic images बन जाती है. Then we came to a real-time ray tracing. Real-time ray tracing means I'm having a cup of tea with you, and आपके सामने मैं colors वगैरह change कर रहा हूँ. And then I can optimize it and then send it to machine. So let us understand this process. This is how we started. कि एक पेपर पे बनाया पहले, जो भी कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे पास, और एक क्लाइंट को अच्छा लगा, okay we book it. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, when it comes and it was assembled at a side, then the problem started. Then client might say कि मैं इसको कुछ अलग ही समझा था, because I saw in a sketch, maybe ये पैनल ऐसा नहीं था, या बैक ऐसा नहीं था, या साइड ऐसी नहीं थी. So with the sketch we have a problem. The problem with the understanding of the carpenter who is executing, or maybe the executor and the end customer. फिर धीरे-धीरे हमको एक डिवाइस मिला था कंप्यूटर से पहले, जिसमें इजीली आदमी स्केच करके बना सकता था. ओके, एट दैट टाइम आल्सो देयर वाज नो कंप्यूटर, तभी लोगों ने 2D बनाना स्टार्ट कर दिया था. अब इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है, एंड देयर आर नो इफ्स एंड बट्स बनने के बाद. ओके, सो हियर आई कैन सी के अंदर से ये ऑब्जेक्ट कैसा लगता है. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वन ऑब्जेक्ट नाउ. आफ्टर आई फिनिश दिस स्लाइड आई विल शो यू वन कंप्लीट इंटीरियर प्रोजेक्ट एज वेल. ओके, एंड देन केम अ 3D टाइम. तो यहाँ पे जो चीज मैं 2D में दिखा रहा था, अभी मैं क्लाइंट को उसको 3D में दिखा सकता हूँ. तो अभी इसको हम घुमा के देख सकते हैं, लाइंस को कलर दे सकते हैं. ओके, सो क्लाइंट को 3 डायमेंशंस में समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखने वाला है. वो स्केल कर सकता है, गेज कर सकता है कि रहेगा मेरे घर में कैसा होगा. एंड देन इसमें एक शेडिंग आ गई थी. तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे आती गई, प्रोडक्ट वैसा इवॉल्व होते गया. अभी शेडिंग के बाद लोगों को और अच्छा लगने लगा. सो वी the software guys put more efforts, और यहाँ पे उनको मटेरियल लगा के भी दिखा दिया कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद ऐसा दिखेगा. So people now have lot of understanding कि मुझे मटेरियल का कॉम्बिनेशन से कैसा लाना है. और एक बार ये हो गया then I can now explore it and I can see कि इसको बनेगा कैसे और इसकी असेंबली कैसे होगा. So this is one of the good example of a modern furniture. ये हम लोग ने सिस्टम से बनाया था, and I will show you कि ये कैसे बना और उसकी यूटिलिटी क्या है. तो फर्नीचर और मॉडर्न इंटीरियर सिर्फ वो नहीं है जो दिखने में अच्छा हो. इट्स मोर अबाउट यूटिलिटी देन दैट ऑफ फैशन. तो एक फैशन भी नहीं है, छोटी से छोटी चीज है बट इसका यूज बहुत सारा है. इट्स कंप्यूटर टेबल आल्सो, इट्स अ नॉर्मल ट्रॉली आल्सो, इट्स अ पेडेस्टल यूनिट आल्सो. सो इट्स लाइक हैविंग मल्टीपल यूटिलिटीज. अभी ये सारा होने के बाद व्हाट हैपेंड, पीपल अगेन फेल्ट अ नीड, देयर इज स्टिल समथिंग लेस. व्हाई नॉट वी डिजाइन समथिंग व्हिच इज पैरामेट्रिक. नाउ पैरामेट्रिक इज, अगर मैं एक जगह पे ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूं तो मेरा पूरा ड्राइंग चेंज होता है. ओके, लेट्स से आई मेड अ नाइस आर्क एंड अ नाइस सर्कुलर थिंग. तो ये भी क्या लगा है, रेलवे ट्रैक है. सो इफ समवन इज थिंकिंग ऑन इट, ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे ट्रैक बन रहा है. ओके, नाउ आई एम एडिंग सम 2 मोर आइटम्स ऑन इट. ये मुझे रेल्स टाइप लग रही है. सो जो टॉय होता था वैसा लग रहा है कि टॉय बन रहा है. बट इफ आई नाउ चेंज वन ऑफ द पैनल्स, ओके, एंड आई चेंज द हाइट ऑफ इट, सो इट लुक्स लाइक कि अगर मैं कुछ अभी यहाँ पे फर्नीचर बनाने जा रहा हूं. ओके, सो एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर इज नाउ गोना चेंज इन माय एक्चुअल ड्राइंग. या और अभी धीरे-धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है एक मैं कॉन्फ्रेंस टेबल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, माइट बी डाउन. ओके, और अंदर मैं पैनल्स बना रहा हूँ उसके, एंड देन मे बी आई विल ऐड अ टेबल टॉप टू इट. तो ये सारी चीजें, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटीरियर. ओके, सो ऑल द प्लानिंग इज डन ऑन माय कंप्यूटर एंड नॉट ऑन अ पेपर. आई एम नॉट डूइंग एनी टॉक्स ऑन द फोन. आई एम शोइंग क्लाइंट, सिटिंग विद हिम कि मैं इसको ऐसा चेंज कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट scale it the way you want, or just आपके पास space है. And once this was done, then people got a part list of it. तो अभी इसके अंदर क्या लग रहा है, I could just see it, but I want on a piece of a paper कि वो कैसा कटने वाला है, उसकी edgings कैसे होगी, how is the material for it. So this is something again which is helpful for the guy who is executing a project. तो अब ये मेरी एक like black and white thing. Of course we don't want to give it to a client. Client के हाथ में नहीं जाएगा, ये पैकेट में जाएगा जहाँ पे ये फर्नीचर बनने वाला है. ओके, एंड आफ्टर दिस अ कोटेशन, अ सिस्टमाइज्ड कोटेशन गोस टू अ कस्टमर. तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही बटन्स होते हैं, you click a button and the quotation goes to a customer.
कि ये प्रोजेक्ट आपका इतने का है. So the things are smooth. आप कस्टमर के साथ आमने सामने बैठे हो, you say this is a design, this is an area, put one cabinet, put one tall unit, okay, make a painting, put putty, okay, make electrical designs or drawings, and then make plumbing here. तो एक पीस पे मैं उसको कोटेशन दे सकता हूँ डायरेक्टली वन पेपर पे कि आपका ये इंटीरियर का प्रोजेक्ट इतने का है. Again, this helps in making a good modern interior project. So एक प्रोजेक्ट डिटेल चली जाएगी क्लाइंट को, जिसमें client can see where he's spending most on the project. Now this all these graphical representations, it's very hard to draw and then show it to a client. तो जब तक client भाग जाएगा, so you get things ready, okay, in your software again, and he knows what things he's buying, okay, and even the slightest things are coming here with the pictures. So at the end, there are no questions being asked by the client, like what was ordered and what is what delivered on the site. So all the hardware, screws, even the door bumpers you see here, this is all part of software going with the modern interior industry. And this is one of a good example what I always show to guys for if you want to see a modern kitchen. This is again straight, clean, and you can see there is good natural light coming inside. There is less use of artificial lights and LED lights, what we do nowadays, and it is very well planned. And again, you see, I'm not using a wall here. So ये wall से differentiated किया हुआ kitchen नहीं है. There is a nice platform जहाँ पे मैं food serve कर सकता हूँ, और अगर मैं इस पे आगे chair लगा दूँगा, high chair, तो ये एक table भी बन सकता है. Okay. And once this ray tracing was done, then there is another example where this industry evolved, और अभी आप client के साथ बैठ के color change कर सकते हैं. So if client wants some green color or gray color, you can just change it right away. I can add some human models inside it, and I can show कि ये height इतनी होगी, और ये human height भी हम gauge कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं. So client can understand कि अगर मैं जो wall unit है, if we open it, is it gonna bend the hat, or it's very free and the mobility is very good inside the kitchen. So again, one of the good functions which young interior aspirants and the designers can use it. And once the design is being done, then it's important to understand how many number of boards are required. So इसको बोलते हैं हम material resource planning. अभी मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मुझे cabinets cut करने हैं, okay, मुझे कितने बोर्ड लगने वाले हैं? Let's say I'm cutting 5 units. तो यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे 4 8x4 के बोर्ड लगने वाले हैं. So carpenter को क्या procure करना है? He gets it from here. अभी इतने बोर्ड लगने वाले हैं, so I also get the detail of number of laminates. इसके बीच में glue कितना लगने वाला है? The system calculates it. So when it goes for the gluing, ऐसे नहीं साइड पे कारपेंटर एक सामान का लेके आ रहा है और एक प्लाई लेके आ रहा है एंड स्टिकिंग इट. व्हाट इज गोना डू इज वो प्लाई पे ग्लू कितना लेना है उसको नहीं पे पता है, और ग्लू का डब्बा लाके मशीन पे रखेगा, एंड द गाय हु इज पेस्टिंग विल यूज द सेम अमाउंट ऑफ ग्लू. सो द वेस्टेजेस एंड एवरीथिंग इज लेस इन दिस. नाउ आई जस्ट मेड वन एग्जांपल हियर. ओके, तो जब ये आईफोन नया नया आया था, इट वाज न्यू इन द मार्केट, दे हैड अ lidar scanner in front of it where you can open the phone with the help of your face. So I realized कि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है which can read the depth of your face. तो जब ये कैमरा रीड करता है कि ये इसका फेस है, so of course it can understand कि यहाँ पे डेप्थ कितना है, नोज से लेके चीक तक, ओके, चीक से लेके यहाँ तक मेरा डेप्थ कितना है. So ये फोन्स अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं how the model of your face looks like. तो मैंने इसका यूज किया and I tried in one of my phone. मैंने फ्रंट कैमरे से अपने फेस को रिकॉर्ड किया, and after that I put this thing into कंप्यूटर, ओके, एक सॉफ्टवेयर में डाला, तो मेरा फेस का मॉडल पूरा सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ले लिया. ओके, नाउ व्हाट आई डिड, अभी मुझे इसको मैन्युफैक्चर करना है. ऑफ कोर्स आई कांट पुट दिस थिंग ऑन अ मशीन, मशीन इसको बना नहीं पाएगा ऐसा, मुझे इसको पैनल का डिटेल देना पड़ेगा. तो मैंने इसको स्लाइस कर दिया और मैंने इसको पैनल्स में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट नंबर ऑफ पैनल्स, सिस्टम ने मुझे बताया एक थिकनेस डाल दे. मैंने 12 mm का थिकनेस डाला, सिस्टम ने बोला इतने पैनल्स लगेंगे. मैंने बोला ठीक है. अभी ये पैनल्स को मुझे स्टैक करना है, तो मैंने इस पे होल्स कर दिए दो. ओके, 2 होल्स करने के बाद मैंने इसमें होल्स पंच कर दिए, क्योंकि मुझे फिर स्टैक करने के लिए मुझे समझ में आना चाहिए पहला पैनल कौन सा जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा. ओके, अगर इसका सीक्वेंस भी बिगड़ गया देन द होल थिंग गोस फॉर अ टॉस. और उसके बाद हमने इसको कट किया और एवरी पार्ट गॉट अ लेबल ऑटोमेटिकली फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि जब तक इसके लेबल्स नहीं लगेंगे मुझे पता नहीं चलेगा क्या पार्ट किधर गया. ओके, सो पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 we stacked it together and we generated a piece, okay, which looked like a statue. So this was just a try we gave it, and this job was done in like 15 minutes. Okay, we used a nice technology, a modern technology,
using just your smartphone, and I could make such kind of, art with it. Now this is just an example what I did. We don't want to make faces here, okay? But it was a good example which I can do. And this is something you can see on the screen, again, a part of a modern interior. You can make it from the software right away. And now I'm going to show you some other examples. So this was the slide what I wanted to show you guys. I will just turn this off. और अभी मैं आपको कुछ real time examples देता हूँ. Okay, real time examples में one I want to show you is a piece of the furniture what I did. Okay, so this was drawn completely in the software. I could easily, explode this thing. And if I explode it, you can see how the internals are being attached together. Okay, so इसमें छोटी-छोटी details आ गई है. How many number of legs, left, right, top, bottom, और मुझे कितने parts लगने हैं. Okay, even if I open the chair, then you can see animation here. This kind of chair. Okay, there is a table on the right hand side. For इसकी planning, I can just get with a click. So I'll just move this chair back, and I will say I want to see a part this out of this. तो यहाँ पे मुझे इसका detail पता चलता है. Okay. Now I have n number of designs, but I would like to show you one interior design which might be helpful for you guys to understand. So I'll just turn off some of the lights, and I will also turn off the radiosity and make it blurred. And now let us see how the design was made. So I will just scale the object a little bit bigger. So this is one of the cool example I imported from one of the designer. Okay, and you can see this is very much minimalistic, and of course space is coming because this was a flat in Mumbai. It's very expensive city. यहाँ पे घर बहुत छोटे हैं, so the planning has to be done, with lot of precision. So अगर मैंने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, maybe I will just lose the whole utility part of the flat. तो यहाँ पे ये छोटे से area में you can see there is a nice dining area. Okay. And if I go, then there is nice living area with the TV, and whatever things you see is real time. So अगर मुझे यहाँ पे कोई बोलता है कि I want to change this color, तो मैं यहाँ पे color पे आऊँगा and I say I want to just change the color maybe to something else. Okay, of course I'm not going to use all this color, just for an example. So in any color I will just make this thing. I will just use normal natural color, and I will now render this thing. So with this, I will just say I want to start my rendering. So I'm using a low resolution as of now because there are a lot of tasks running and the live streaming is going on. So I will say I want to restart my calculation. Now this will turn on my HDR and it will turn on the rendering of my project. So things are now getting faster with the technology. Sitting with the client, presenting the render, changing the color in front of them. Anyone the changes are being asked, I do it right away. I don't say कि मैं घर पे जाता हूँ, मैं change करके आपको 3 दिन के बाद भेजता हूँ. So I'm just doing the render here, and the render is done. Okay. I will say I want to just remove all these dots. मैंने इसको denoise किया, और अभी ये एक और iteration पे ये मेरा image clear हो जाएगा. Okay. This is perfect to show a client in a first sitting. So you can imagine I just took like 14 seconds to render a view. Okay. अभी client बोलेगा I don't like this thing. No problem, I will just stop it. Okay, I will stop my render engine here, and I will again go back to the edit mode. Okay, so I say just go back to the edit mode and let us change the color again. So this time I'm going to use something different. Okay, maybe a little bit on this pink shade. Okay, and I say okay, and I restart the rendering again. So still I have not finished my coffee. So client के साथ मैं अभी भी coffee पी रहा हूँ. And I'm able to show him, 2 set of examples. तो मैं दोनों set of examples से मैं एक interior का design में बना के आपको immediately दे सकता हूँ. Of course इसमें material application के लिए मुझे time लगा है. Drawing करने के लिए मैंने एक time लिया, इसमें 2-3 घंटे का time लगा है. But वो सब चीज़ मैंने client के सामने नहीं किया. I made my project ready, call the client, okay, and then I'm showing him the stuff. तो अभी मैंने इसको थोड़ा pinkish shade पे कर दिया. There is again another set of example, or I will say denoising here, and my stuff gets cleared out like in 2 seconds. Now this is ready as well. I don't know how good it is visible on your screen because it is live streaming,
but I hope you guys understand that it's a big we have in this industry with the help of modern technology. So I will now stop this thing, and I will just say if you guys have any questions, or maybe if there is any question answering session, you can ask, and I can show you some things, with that of your questions. So this was it from my side, and I would be happy to answer the questions from the team. Sir, your mic is on mute. Presentation. I hope our students have learned a lot in this small presentation. अभी कुछ सवाल होंगे हम जो लेना चाहेंगे, जब तक के बाकी सवाल आते हैं। मेरे कुछ सवाल है शारिक सर कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने अभी हमको दिखाया, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न, कितना टाइम लगेगा हमको सीखने के लिए, या किसी स्टूडेंट को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है इसको सीखने के लिए? ओके, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स। डिजाइनिंग का मॉड्यूल अलग है, मशीनिंग का मॉड्यूल अलग है। अगर किसी को कंप्लीट एंड टू एंड सीखना है, ऑफ कोर्स ही नीड्स अ क्लासरूम ट्रेनिंग फॉर 45 डेज, और उसके बाद ही नीड्स टू गो फॉर एन इंटर्नशिप, बिकॉज जस्ट क्लासरूम ट्रेनिंग इज नॉट गोना हेल्प टू लर्न इट एंड टू एंड। अगर किसी को सिर्फ डिजाइनिंग सीखना है, मुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड या कटिंग से रिलेटेड, आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल्स, तो वो 15 दिन में भी इसको सीख सकता है। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न। ओके। और मेरे को एक और सवाल था सर कि अभी जैसे हमने देखा कि मॉडर्न इंटीरियर में वी नीड लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अभी होता क्या है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि मेरे यहाँ पे कुछ अलग लगे, जो मेरे पड़ोसी के यहाँ सोफा लगाया, मेरे पड़ोसी के यहाँ पे जैसा किचन लगाया, मेरे पड़ोसी के यहाँ जैसी वार्डरोब लगी, मेरे को वैसा नहीं चाहिए। आई वांट समथिंग डिफरेंट, मेरे को कुछ अलग हट के चाहिए। तो मेरे को ऑब्वियसली फर्नीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीरियर। तो मेरे को आई हैव टू प्ले विद फर्नीचर ओनली, आई कैन नॉट प्ले विद द फ्लोरिंग और सीलिंग, उसमें हमारे पास में बहुत ज्यादा चांसेस होते नहीं है। तो आई हैव टू प्ले विद द फर्नीचर। तो मेरे को इसमें पूछना था सवाल आपसे कि सर इस टाइप का फर्नीचर जब हम मॉडर्न इंटीरियर में हम करते हैं, तो क्या इस टाइप के सॉफ्टवेयर हमको डिफरेंट फर्नीचर डिजाइन करने में हेल्प करते हैं क्या? और उसको क्या हम मशीन्स के साथ में, जो नई मशीनरीज आई हुई है उनके साथ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या? कैन मशीन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ आवर सॉफ्टवेयर? Yes, of course. So in this software, if you design anything which is out of the box, मतलब कोई चीज किसी ने देखा नहीं आज तक, and maybe customer comes with a thought कि मेरा फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, और he shows a picture, पिक्चर दिखा दिया उसने, ऐसा मुझे फर्नीचर बनाना है। You can draw in this thing. The only thing is you need to be technical, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि वुड मेरे पास क्या साइज में अवेलेबल है, मटेरियल मुझे क्या साइज में मिल सकता है। Okay, that thing the designer should have knowledge, and the system will tell you कि कितने पैनल्स लगने वाले हैं, और ये पैनल्स मशीन पे कैसा जाएगा। सो जितनी भी मशीन्स है इन दिस कंट्री, लेट इट बी अ जर्मन मशीन और इटालियन मशीन और चाइनीज मशीन और इंडियन लोकल मशीन्स, ये मशीन्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो मशीन को समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर में एक पैनल ये साइज का है, और यहाँ पे इसके होल्स हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग करना है, यहाँ पे ग्रूविंग करना है, जरी मारना है। तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को बताता है मशीन को, और मशीन को पैनल से रखा जाता है और एक फाइल पे क्लिक किया जाता है, और सारा चीज मशीन पे होता है। ओके, ओके। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल आया है मेरे पास में, पूछने की क्या हम जैसे मान लीजिए हम कहीं टाइल सिलेक्शन के लिए गए या हम वॉलपेपर सिलेक्शन के लिए गए, सो कैन वी टेक दैट वॉलपेपर एंड कैन वी शो इट इन आवर सॉफ्टवेयर? Yes, of course. So even in the example what I'm showing you guys, सिर्फ मुझे इमेज उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। So it is just like dragging and dropping one file from a folder to folder. तो मुझे अगर कोई फ्लोरिंग पे कस्टमर ने फ्लोरिंग ला के दिया कि मुझे ये फ्लोरिंग चाहिए, मैंने वो इमेज उठा के यहाँ पे रख दिया तो फ्लोरिंग आ जाएगी। ओके, ओके। कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एकदम फ्रेशर्स हैं, नए हैं इंडस्ट्री में, व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम to choose interior design as a career? What is your advice and what would you tell them? So for the young aspirants, जो young लोग हैं अभी जिसको करियर बनाना है, I would say there is a big gap in the industry. तो अभी तक जो इंडस्ट्री चल रही है, people are not aware कि फर्नीचर और जो
इंटीरियर में लगने वाली जो भी चीजें हैं वो घर से बाहर मतलब साइड से बाहर भी बन सकती है, इतने लोगों को पता नहीं है। एंड दिस अवेयरनेस इज नाउ गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। और अवेयरनेस बढ़ने के साथ जो इंडस्ट्री में जो यूथ चाहिए, जो डिजाइनर्स चाहिए, दे आर नॉट अवेलेबल इजीली, तो उनका डिमांड बहुत हाई है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स एंड इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन दिस देन यू विल गेट वेरी इजी अपॉर्चुनिटीज। तो अगर किसी को जॉब करना है या किसी को खुद का बिजनेस डालना है या कुछ वेंचर डालना है, दिस इज द राइट टाइम। ओके, मे बी फॉर अनदर 2-3 years देयर इज अ बिग गैप, वी डोंट नो कि ये कितना फास्ट फिल होगा, but this industry has a big gap. If we go to China or if we go to any European countries, they are far ahead. They don't have carpenters going on site. Of course, वहाँ पे भी मिल वर्क होता है, छोटा काम है वो साइट पे जाके होता है, but the major work is all done on the computer. कंप्यूटर से फाइल जाती है मशीन पे और मशीन से जाती है साइट पे। अभी अपने पास जो गैप है, we have the gap of that we lack educated carpenter and educated technical guy. तो जो टेक्निकल गाय है उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, और जिसको कंप्यूटर चलाने आता है उसको टेक्निकल स्टफ नहीं पता। नाउ इमेजिन आपको कंप्यूटर चलाने आता है और आपने टेक्निकल चीजें भी सीख ली, सो यू आर जस्ट गोना फायर इन दिस इंडस्ट्री एंड आपको आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज यू आर जस्ट फिलिंग द गैप व्हाट वी नीड राइट नाउ। तो अभी जो बड़े बड़े स्टफ, जो बड़े बड़े फर्नीचर है, वो कौन करता है? कारपेंटर आता है, वो साइड पे बैठता है जमीन पे और वहां पे बैठ के करता है। तो जो प्लानिंग होनी चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं होगा। Okay, so I would say you should pursue this and you should take modular furniture as your career. Yes, sir. ओके, शारिक सर एक और था कि अभी हमने जितने भी सॉफ्टवेयर हम देखते हैं उसमें भी we have seen lot of home interior. Can we make office furniture as well, or can we make commercial furniture in this? Yes, of course. You can make lot of furnitures or any metal part, any glass part is there. तो अगर मैं इंटीरियर से जब मैं कमर्शियल स्पेस में जाता हूँ तो वहाँ पे मेटल ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ओके, ग्लास ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सो द बेस्ट पार्ट इज द सॉफ्टवेयर कैन कैलकुलेट एनीथिंग फॉर यू। इनफैक्ट जो जितने भी विक्टोरिया सीक्रेट स्टोर है अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर डन बाय दिस सॉफ्टवेयर। इफ यू गो टू अ शॉपिंग मॉल एंड इफ यू सी जितने भी वहाँ पे स्टोर्स है, टॉमी हिलफिगर के, ज़ारा के, वहाँ पे कारपेंटर्स आके काम नहीं करते। जो मैकडॉनल्ड्स के स्टोर है, जो बर्गर किंग के स्टोर्स है इंडिया में, वो सारे ये सॉफ्टवेयर से बनते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्या है, उनको स्टोर्स हर 6 महीने में रिवैम्प करना होता है, या मे भी कोई नई जगह पे स्टोर आ रहा है, सो दे कैन कॉल कारपेंटर और उसको बोल सकते हैं कि आप 6 महीना तक स्टोर बनाने के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर डन ऑन सॉफ्टवेयर। द ओनली थिंग इज वी डोंट हैव द अवेयरनेस राइट नाउ। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है बनके? मलेशिया से आती है, सिंगापुर से आती है, इंडिया में होता है काम but on a very minimalistic stage because अपने पास manpower नहीं है। So again we have this big gap in this industry. Okay, so nice inputs because होता क्या है कि हम लोग जब इंटीरियर डिजाइनर बनते हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स इंटीरियर डिजाइनिंग सीखते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम दे विल गेट होम इंटीरियर जॉब। दे माइट गेट ऑफिस इंटीरियर, दे माइट गेट शोरूम इंटीरियर, और कमर्शियल स्पेस डिजाइन करने का भी उनको चांस मिल सकता है। So therefore I asked this question. शारिक सर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम बात करते हैं कि आज मॉडर्न इंटीरियर की, तो मॉडर्न इंटीरियर में पीपल मोस्टली गो फॉर मॉड्यूलर फर्नीचर, लाइक टीवी यूनिट है या किचन है या वार्डरोब्स है या बेड्स हैं। तो मॉडर्न फर्नीचर और जो कारपेंटरी फर्नीचर है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कैन यू प्लीज एलोबरेट? ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सबने लेगो ब्लॉक से खेला होगा बचपन में। वो कलरफुल ब्लॉक्स आते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर के, येलो कलर के जो ब्लॉक्स आते हैं, जिससे हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं या मे बी कोई एनिमल्स बनाते थे बचपन में। सो मैं आपको एक लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मॉड्यूलर फर्नीचर इज। सो इमेजिन अगर आपने एक कैबिनेट ऑर्डर किया मार्केट से, ओके, और आपका लेफ्ट पैनल खराब हो गया। अभी आपको पूरा कैबिनेट फेंकना नहीं है, ओके, वो एग्जैक्टली वो लेगो ब्लॉक्स के जैसा है। आपका एक पीस खराब हो गया, आपको दूसरा पीस वहाँ पे यूज करना है। सो यू कैन इजीली ऑर्डर कि मेरा लेफ्ट साइड खराब हो गया है तो मुझे वो ऑर्डर करना है, तो मेरा यूटिलिटी बहुत इजी हो जाता है, मेरा डिजाइन बहुत क्लीन लगता है। और अगर सेम चीज वो कारपेंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो पैनल को नेल से उस पर स्ट्राइक करके उसको चिपकाएगा, और अगर मुझे वो पैनल टूट गया तो मुझे पूरा फर्नीचर मेरा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिपेयर भी करता हूँ दैट लुक्स वेरी शाइनी, वो मैं यूज नहीं कर सकता, वो गंदा पुराना फर्नीचर ही लगेगा। बट जो मॉड्यूलर फर्नीचर है,
अगर मेरा एक भी पैनल खराब हो गया, आई कैन जस्ट रिप्लेस इट। द अनदर एडवांटेज इज कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है फर्नीचर, सो आई कैन इजीली डिसअसेंबल इट एंड आई कैन फ्लैट पैक इट, और मैं उसको उठा के लेके जाके दूसरी जगह पे भी फिट कर सकता हूँ। तीसरा बेनिफिट है, मॉड्यूलर फर्नीचर पूरा मशीन से बनता है, तो जो साइड की मेरी जो एजिंग्स होती है, मैं वहाँ पे कोई ग्लू चिपका के साइड पे चिपकाता नहीं हूँ, वो मशीन से स्टिक होके आता है। तो फर्नीचर के अंदर जो पानी घुसने के चांसेस है या फर्नीचर खराब होने के चांसेस है, वो बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो फर्नीचर 10-15 साल तक आपका नया लगेगा। इनफैक्ट मैं कारपेंटरी से अगर सेम शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2-3 साल में मुझे पुराना लगेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। ओके, अनदर एडवांटेज इज कि अगर मुझे मॉड्यूलर फर्नीचर बनाना है तो मेरी साइट पे कचरा नहीं होगा। इफ आई कॉल अ कारपेंटर, इमेजिन मुझे एक स्टोर बनाना है, एक मेडिकल स्टोर बनाना है इससे, और मैंने एक साइट लिया रेंट पे, बॉम्बे में इजीली 2-3 लाख रुपए रेंट है। ठीक है, एग्जांपल, अभी मैं एक कारपेंटर को बुलाता हूँ तो मुझे 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। सो यू जस्ट इमेजिन कि 3 महीने का मेरा रेंट कितना होगा, 6 लाख रुपए मेरा रेंट हो गया, व्हिच आई हैव टू गिव। देन आई हैव टू गिव टू द कारपेंटर आल्सो, वहां पे कचरा करेगा। एंड अगर मैं उसको फैक्ट्री में बनवा रहा हूँ, मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री के थ्रू, मैं जो मॉड्यूलर इंडस्ट्री समझता है कमर्शियल स्पेस में, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो उसने सारी चीजें फैक्ट्री में बना के लेके आया और मेरी साइट पे वो 3 से 4 दिन देगा असेंबल करने के लिए। सो यहाँ पे आई एम सेविंग लॉट ऑफ रेंट आल्सो, एंड माय डिजाइन इज लुकिंग क्लीन एंड मिनिमल। या यस सर। सर एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में अभी, शिवानी सागरे, उनका सवाल है सर, ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या है अपने, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? Okay, so the name of the software is 3D-CAD Panda and it comes from Germany. ये सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कमर्शियली 10 लाख रुपए, ओके, बट स्टूडेंट्स के लिए द कॉस्ट इज डिफरेंट, बट इट हैज टू कम थ्रू इंस्टीट्यूट। सो इफ यू एनरोल टू एन इंस्टीट्यूट, okay, where this software is being taught, so the institute will give you this software along with the curriculum. तो स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए ऑफ कोर्स पे करना है, स्टूडेंट्स के लिए इट्स फार चीपर, but it is non commercial use. So you can get more details from Bharat sir after the lecture, maybe he can forward you guys. Shravani, soon we are going to launch one new course on modular furniture, where you can learn this software and you will get the software. First of all, you have to learn this software. अगर ये software आपको आता है, then you can work on it. तो हम लोग जो नया बैच चालू करेंगे नया सेशन में, तो डेफिनेटली आपको ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे सीखने मिलेगा एंड यू कैन वर्क ऑन इट। शारिक सर, एक और जो सवाल रेगुलरली आता है व्हेन वी डिजाइन मॉडर्न इंटीरियर की जब हम बात करते हैं कई बार, तो बहुत सारा इसमें लोग जो हम बात करते हैं कि मोनोटोनस दिखता है या मोनोटोनी हमको ब्रेक करना है, तो हाउ वी कैन डू सच थिंग्स while designing a modern interior? Okay, so that is an old school thought कि वो monotonous दिखता है, because पहले मॉड्यूल्स, जब मॉड्यूल बेस्ड काम होता था तो लोग ना स्टैंडर्ड चीजें बनाते थे मॉड्यूलर इंडस्ट्री में, but nowadays with the help of the software you can make a non-standard thing also as a modular furniture, okay, and you can give it a modern touch very easily, but you need to use a modern software. अगर मैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, जैसे मैं CAD यूज कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उसमें मुझे स्केल करके एक कस्टमाइज्ड डिजाइन देने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. So you have to learn something which is out of a traditional software, and if you learn any modern software जहाँ पे आप parametric डिजाइन कर सकते हो, तो उसको आप मॉड्यूलर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो वो ड्राइंग को, and it will be giving you complete data from design until the machining, packaging, your dispatch part. So that's how you can just make this thing happen. Okay, so one more question from Nilesh Patil. He's asking, can you tell us something, difference between AutoCAD, SketchUp and VREF? What is the difference between these softwares and Python? Okay, so all are wonderful software, but every software has its own utility. Now AutoCAD is more of making concepts. Okay, if you want to materialize it, I would not use AutoCAD, because AutoCAD is not going to give me a POQ. तो AutoCAD मैं कब यूज करूंगा, जब मुझे एक ना कंसेप्ट बना के किसी को प्रेजेंट करना है कि आपका डिजाइन ऐसा दिख रहा है, लाइंस में सिर्फ लाइंस रहेगी उसमें, ठीक है। अगर मुझे वो चीज को मटेरियलाइज करना है, मतलब मुझे उसको बनाना है रियलिस्टिकली, तो मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसको कटिंग लिस्ट बोलते हैं। तो AutoCAD में मैंने कुछ भी चीज बनाया है, मेरे लिए लाइन है,
ओके, बट अगर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पाइथन, तो इसमें मुझे पता चलता है कि ये जो लाइंस है ये लेफ्ट साइड है, कैबिनेट का राइट साइड है, इसके अंदर एमडीएफ लगा है, मरीन प्लाई लगा है, कमर्शियल प्लाई लगा है, या मैं पार्टिकल बोर्ड यूज कर रहा हूँ, कितना एमएम का ये प्लाई है और कितने पीस मुझे कट करने हैं। सो ये चीज है ना मिसिंग है फ्रॉम AutoCAD, SketchUp and V-Ray. V-Ray is a visualizing software, okay, where you can visualize stuff in 3D. It's an excellent software, but again, it is just until the extent of visualization. It's not a complete software for interior. If you talk about a complete software, then what I'm showing you is यहाँ पे मैं डिजाइन भी कर रहा हूँ, मैं रेंडर भी कर रहा हूँ, मैं POQ भी निकाल रहा हूँ, मैं यहीं से कॉस्टिंग भी दे रहा हूँ, और मैं यहाँ से प्रोडक्शन के लिए डेटा भी सेट कर रहा हूँ. Okay, again, SketchUp is also a 3D system, but it is to make concepts again. You can't materialize things out of it. Okay. Vinayak Pawar ka same question hai. Vinayak Pawar is asking, in this software, can we calculate the quantity of material? Can we do the optimization in this? Yes, so, exactly. You answered this question. You can calculate the quantity of material, but can we do the optimization in this? Yes, we can do the optimization. In fact, in the slides, maybe it was not that visible, but अगर एक मैंने पूरा अपार्टमेंट बना लिया जिसमें एक किचन है, जैसे 2 वार्डरोब है, एक बेड है, एक वैनिटी यूनिट है, एक सेंटर टेबल है, और मैंने एक बटन क्लिक किया तो मुझे सिस्टम बताएगा कि आपको 8 mm के कितने बोर्ड लगने वाले हैं, आपको 18 mm के कितने बोर्ड लगने वाले हैं, 25 mm के आपको कितने बोर्ड लगने वाले हैं, और कितना % आपका वेस्टेज जाने वाला है. और अगर आपके पास ऑफकट्स पड़े हैं, मतलब पहले का वेस्टेज पड़ा है लास्ट प्रोजेक्ट में से, तो सिस्टम आपको बोलेगा कि आप ये वाले ऑफकट्स भी यूज कर सकते हो. ओके, सो इट कैन गिव यू एन ऑप्शन, सो आप इजीली इसमें मटेरियल मैनेज कर सकते हो. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर? So yeah, this is always a question. So there is no way this software is available on internet. It has to come from an institute or from a commercial. So commercial is very expensive, and institute Bharat sir is again starting with a course for the students where the software will be taught in the classroom. Okay, and it will be taught by industry experts, okay, who are designers who understand furniture industry. So you can enroll this and you will get this software. You can download it easily, but it's not available on the internet as of now. And now one more important question. It's a very important for the students. Mahesh is asking this question. How much I will get paid after learning this software? कितना पैसा कमाऊंगा सर ये सॉफ्टवेयर सीख लिया मैंने तो? क्या सैलरी मिलेगा मेरे को, कैसे मिलेगा? So it's normal question, and but a very important question. Yeah, it's a good question, but it is too soon to ask Mahesh. So आपका जो अर्निंग वाला जो पार्ट है, जब आपने कोर्स कंप्लीट किया और आपने, तभी आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने इसको कितना सीखा है. ओके, बट मैं आपको आइडियल रेंज फिर भी बता देता हूँ बिकॉज यू आस्क्ड. तो अगर एक फ्रेशर है जो इंडस्ट्री को नहीं जानता है, मतलब जिसने सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग करके आया है, तो उसको इजीली 20,000 मिल सकता है. ओके, फ्रेशर को, बिकॉज इमेजिन फ्रेशर भी यहाँ से निकल के एक किचन का डिजाइन, 2 किचन का डिजाइन बना लेगा 1 दिन में या 2 दिन में. ओके, महीने में अगर वो 5 डिजाइन बना लेता है, सो यू नो द रेट्स इन द मार्केट, एक डिजाइन का कितना पे मिलता है. एंड एक फ्रेशर को 20 मिलेगा. अगर आपने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले लिया, देन यू कैन इजीली अर्न लाइक 40, 60. There is a guy who I know, you know, in the industry who is earning after 4 years of experience 120,000, 1,20,000 रुपए कमा रहा है वो इंडिया में. Okay, in fact there is lot of opportunity in other countries also. तो इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्ट होता है. So if someone want to move out, there is lot of opportunity outside also. तो जैसा गैप इधर भी है, वहाँ पे भी लेबर का गैप है, because not many people know about this software and they are using it. Yes, we know. Last year, students who are passed out, they got very good placement because they know the Python software, and I know tentatively 13 students got placement after knowing this software, after learn this software. Yes. So it's important to learn this software because you know अभी जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अगर उनको आप सीखोगे, उसमें से पाइथन एक है, तो ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद you know आपको एक स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है. You are not like a general physician, you will become a specialist. जैसे घुटने का दर्द है तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हो, बच्चे को तकलीफ है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो. तो इट इज लाइक दिस ओनली कि अगर ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर आते हैं तो यू कैन बिकम अ मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनर.
तो ये सॉफ्टवेयर तो आपको आना ही चाहिए कुछ ना कुछ। सिर्फ जैसे शारिक सर ने पहले ही बोला कि सिर्फ ऑटोकैड आने से आपका काम नहीं होने वाला है। यू हैव टू लर्न डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, यू हैव टू नो व्हाट इज कैमकैड, और ये सब चीजें आपको आना ही चाहिए। शारिक सर, मेरा एक और सवाल था कि इस सॉफ्टवेयर की डिमांड इंडिया में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में ये इंडस्ट्री, इंटीरियर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। yesterday we were discussing about the industry, how big is the industry। तो हम देख रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो बिजनेस है, टर्नओवर है, 4 गुना बढ़ने वाला है। तो हमको उस हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर्स की भी हमको जरूरत पड़ने वाली है, हमको सॉफ्टवेयर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट डिजाइन, विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर द थिंग्स। मेरा ये सवाल था आपसे कि इंडिया में तो इसकी डिमांड बढ़ ही रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया से बाहर भी इसकी डिमांड है? और क्या हमारे इंडिया से जो इंटीरियर डिजाइनर कर रहे हैं उनकी डिमांड आउट ऑफ इंडिया भी है, और वो जा सकते हैं क्या? हाउ यू कैन हेल्प इन द प्लेसमेंट? सो सर, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी है या जितनी बड़ी कंपनीज है इंडिया से बाहर, लेट्स से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके सीईओ इंडियंस है। ऑल्दो दे आर द कंपनी फ्रॉम यूएस, ओके, बेस्ड इन सिलिकॉन वैली, बट वहाँ पे काम करने वाला एक इंडियन ही है। तो मैं जितनी भी इंडस्ट्रीज घुमा हूँ इंडिया के बाहर, मैं ऑस्ट्रेलिया में घुमा हूँ, मैं यूरोप में घुमा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में घुमा हूँ, तो वहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, दे आर ऑल इंडियंस। ओके, वहाँ पे वहाँ की लोकल लोग काम नहीं करते, दे आर ऑल इंडियंस और मे बी फ्रॉम सम अदर नेशंस which are developing nations like India. And Indians are preferred first because of their accent. अगर मैं एक फिलिपिनो को बाहर भेजूंगा, उसका एक्सेंट अलग है, चाइनीज को बाहर भेजूंगा, उसका एक्सेंट अलग है, बट इंडियन कैन अडैप्ट एनीवेयर। तो इंडियंस की बहुत डिमांड है इंडिया से बाहर। लास्ट ईयर वी प्लेस्ड अराउंड 30 स्टूडेंट्स, okay, for Paita in Middle East and other neighboring countries whom I know, where 30 people are I know by name, okay, कि वहाँ लोग को यहाँ से वहाँ पे जॉब मिली just in the industry in this field. So there is a big demand, and this demand will grow like maybe 10 times in future because वहाँ पे भी industries बढ़ रही है। Okay, Sharik sir, thank you very much. Now it's time for time to leave. So thank you very much, Sharik sir. Guys, if you have any questions, you can ask. We have time, 2 minutes. You can ask any questions. I can see, yeah, there are a lot of questions. Okay. So thank you, Sharik sir, for your precious time. और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और yes, definitely guys, if you want to learn this software, if you want to understand this software, please join us on IDL platform. The fee structure and the timings that we will convey you once you visit our IDL Institute in Deccan. आप आइए, हमसे मिलिए, यहाँ से सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने देखा कि सिर्फ इंडिया में ही हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं, तो इंडिया के बाहर भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। और मॉडर्न इंटीरियर अगर आपको करना है, मॉडर्न इंटीरियर आपको समझना है, तो डेफिनेटली आप को सिर्फ ऑटोकैड आने से काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर्स लाइक पाइथा, जो अभी शारिक सर ने प्रेजेंट किया। और ये सारे सॉफ्टवेयर जानने के बाद में आप का काम बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहला तो आपका प्रैक्टिस आपको करने के लिए, आपको पीआर आपका बढ़ाने के लिए, या आपको मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो नहीं तो क्या होता है, जब आप कारपेंट्री में जाते हैं, जैसे शारिक सर ने बताया थोड़ी देर पहले, व्हेन यू आर गोइंग इनटू कारपेंट्री थिंग्स, सो आपका यू विल प्ले मेजरली, यू विल प्ले रोल एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो हर बार क्लाइंट आपको बुलाएगा, हर बार कारपेंटर आपको बुलाएगा कि सर आज ये खत्म हो गया, आज ये चाहिए, आज ये तकलीफ आ रही है, मेरे को इसको समझा दीजिए आकर के। तो यू विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर। एक डिजाइनर की बजाय आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन के रह जाते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि नए सॉफ्टवेयर को सीखिए, इसको इसके ऊपर काम करिए, इसको अप्लाई करिए, और आप अपना एक अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। तो thank you, Sharik sir, once again. Thank you so much, sir. We'll meet once again with new session. Guys, कल शाम को हम 5 बजे फिर मिल रहे हैं, एक नए सेशन के साथ में, एक नए गेस्ट के साथ में, एक नए सब्जेक्ट और नए चैप्टर के साथ में।
कल का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज सॉलिड वुड, सॉलिड वुड और इनोवेशन। तो कल हम जो बात करने वाले हैं सॉलिड वुड और इनोवेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सॉलिड वुड से हम फर्नीचर या हम इंटीरियर कैसे कर सकते हैं। यस, जैसे शारिक सर ने बताया अभी हमको कि हम जो सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर का हम डिजाइन कर रहे हैं, इसका यूज सिर्फ पैनल बेस्ड फर्नीचर के लिए नहीं है या सिर्फ आपका फॉल सीलिंग डिजाइन करने के लिए नहीं है या फ्लोरिंग के लिए नहीं। तो यू कैन मेक डिफरेंट फर्नीचर्स with the help of solid wood, with the help of panel material like MDF और plywood। तो इनसे भी हम कर सकते हैं। तो कल हम थोड़ा सा फोकस रखने वाले हैं हमारा सॉलिड वुड के ऊपर, सॉलिड वुड और इनोवेशन के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। तो गाइस कल शाम को फिर 5 बजे हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। कीप योरसेल्फ बिजी इन लर्निंग। थैंक यू गाइस।